everyone, I hope I'm audible. So today we have a class on critical reasoning and we will be studying conclusion. So as you know that there are a few topics that are very important as per the CLAT new pattern. The topics are assumption, critical reasoning में inference, strengthen and weaken, ठीक, and then we have assumptions. So conclusion, inference, strengthen, weaken, assumption, ये 5 topics ऐसे हैं जो कि एक स्टूडेंट को जरूर पढ़ने चाहिए because exam में the number of questions from these topics are quite high. So today in this class we are going to understand what exactly the conclusion is. Before we start the session, I would like to give you a little bit of a gist. Conclusion क्या होता है? Conclusion किसी भी author का एक final argument हो सकता है. It can be the opinion of the author. It can be something around which author has written a particular passage. ठीक है, so it can be a judgment, it can be the opinion of the author at last. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा basic. साथ में हम ये भी कह सकते हैं जो conclusion है, ठीक है. Now this is something that concludes your overall paragraph. Okay, so conclusion क्या है? Something that concludes your paragraph. It can be the opinion of the author or the judgment of the author. So everyone, I'm Kriti, your educator for logical reasoning and quantitative techniques. Okay, I have been teaching in CLAT category for 5 years now, and I'm teaching on Unacademy. Make sure to check my special classes at 5:30 p.m. today. I have a class on statement and assumption, and I hope you will join that class on Unacademy platform. Now we have some updates that I wanted to give you. The first one being that the CLAT and the AILET dates are announced. Hi Mahi, how are you? So CLAT and AILET dates announced हो गए हैं. CLAT is on 19th of June, ठीक है, while AILET is on 26th of June. You also know कि there is the last date for registrations भी extend हो गए हैं, ठीक है. CLAT के लिए the last date of registration is May 9, while for AILET it's May 25. So make sure that you register on time, as well as everyone, अगर हमें कुछ extra time मिला है तो we should make sure to prepare, ठीक है, and to prepare better, because जब हमें extra time मिलता है तो हमें और better तरह से preparation करना चाहिए. Now next update. Now as you know that the dates have finally been announced, so you can join these batches to understand fully exactly कि आपको किस तरह से prepare करना है, what's your strategy going to be, what's your हमें practice कैसे करना है. Right sources से पढ़ना is very important. So there is a batch specifically on legal or called Learn Legal. ठीक है, strategy batch on legal modules for CLAT 2022 and 23 aspirants. Now this is a very unique kind of a batch. Many of us feel that we are weak in legal, many of us feel we are weak in maths or any other subject. So अगर आपको लगता है आप एक particular subject में weak हो तो आप ये batches ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूल वाइज पढ़ाई होगी. Module wise means all the topics will be divided among CLAT and other law entrance exams. Like CLAT में क्या important है उसकी सारे एक साथ हम topic cover करेंगे, then दूसरे topics cover करेंगे, and we will be covering all your subjects, all your topics. The batch starts from 23rd of March. So make sure that you take benefits of these batches. You can join our Telegram groups, you can join our community after subscribing. So make sure that you join this batch on time. Okay, the language of this batch is going to be English. We have learned GK and current affairs. Now this batch is going to start from March 23. Language is again going to be English, and this batch will have same modules that we discussed for the legal. And another batch is Learn Reasoning, where I, and Shyam sir will be teaching you logical reasoning. The language again will be English. The batch starts from March 25th. So guys, make sure that you are joining this batch and you are taking all the benefits that you should. Okay. You can also see Unacademy has launched its iconic program. Now iconic में आपको one-on-one personalized mentorship मिल जाता है. You can talk to your educators, you can discuss about your doubts, you can discuss about your strategy, you can talk about any of the problem related with them. ठीक है, आपको कुछ कॉलिंग टाइम मिलेगा जिस पर आप उनसे बात कर सकते हो, अपने स्टडी प्लान्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ये पूछ सकते हो कि कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है. ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन.
it's all and also now you can see the subscription charges. Now this is your iconic subscription while this is your plus subscription. ठीक है, ये यहाँ पे iconic में we have 4 subscriptions and बहुत जल्दी we will be launching the notes as well. ठीक है, the 24 months, 12 months, 6 months and 3 month subscriptions are there, while for plus we have 1, 3, 6, 9, 12, 18 and 24 month subscription. You can also use the code KRITILIVE10 to avail 10% of discount. आप KRITILIVE10 use कर सकते हो और 10% का discount avail कर सकते हो in any of your subscription, everybody. Okay. So now Educator curated mock tests are live. These mock tests are open mock tests. Anybody can join these. कोई भी join कर सकता है. So make sure कि आप इन mock tests को follow करो, इनको join करो और यहाँ से बहुत सारी practice भी करो. Because ये हमारे top educators ने बनाए हैं and these are strictly based on the CLAT pattern. So make sure that you're practicing well with the help of these sectional tests, जो कि होते हैं every weekday, Monday to Friday, 5 PM पर. Okay, 20-minute test will be there, 20 marks का test होगा and 20 questions will be there. Now, Unacademy CLAT is also there on Telegram. Okay, अगर आप कोई भी important update चाहते हो, तो you can search Unacademy CLAT on Telegram, ठीक है, and you can join our channel. So everyone, now let's start with the conclusion. So today's topic is conclusion and आज हम बात करेंगे premise क्या होता है, कुछ components होते हैं logical reasoning के. ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अगर हम बात करें किसी भी लॉजिकल रीजनिंग, मैं एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग की, तो किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स. सम ऑफ देम इफ आई कैन नेम इज प्रीमिस, ठीक है, देन योर कंक्लूजन. प्रीमिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, एनी ऑफ द पैराग्राफ और पैसेज. प्रीमिस क्या होता है, इसको हम एविडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, और वी कैन से दिस इज द फैक्ट प्रोवाइडेड. ठीक है, कंक्लूजन मे और मे नॉट बी देयर. कंक्लूजन कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीमिस. तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूड करना. क्या होता है कंक्लूजन, किसी चीज को कंक्लूड करना. नाउ दिस कंक्लूजन कैन बी समबडीज ओपिनियन. लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड डिस्कस. इट कैन बी समबडीज जजमेंट एज वेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है. I'm going to be a lawyer. My future prospect looks good. Seems like I'm going to make money. ठीक है, अब I'm going to be a lawyer. My future prospects look good. Seems like I'm going to make money. Now this is your opinion about something. ये आपका opinion है. That means कि यहाँ पे जो info आपको दिया है, this is not a premise. ये कोई information provided नहीं है. ये आपका खुद का एक opinion derived है. ठीक है, now this opinion can be right, this opinion can be wrong as of now because यहाँ कोई premise use नहीं किया गया है. But अगर ये आपका opinion है, तो this is what you think about this profession. लेकिन अगर statement 2 को देखोगे, so a study found that the lawyer can earn well, the future prospect looks good. Study found that lawyers can earn well. Now this is your premise in the statement number 2. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा premise है. Premise is the information provided to us. Their future prospect looks good. Now this becomes our conclusion because with the help of this premise we derived this conclusion. Okay, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया हमारा conclusion. Now let me give you a very small example again. Now there is a person, ठीक है, let's say Shavi is a person. Now this person Shavi always secure very good marks in her school. She is someone जिसे हम कह सकते हैं कि वो हर एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर. That means Shavi is an all-rounder. So Shavi is an all-rounder becomes our conclusion over here. With the help of the premise, we derives the conclusion. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी पैसेज के बारे में, so do you see this question on the screen? क्वेश्चन क्या है, what is the conclusion? हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, we have to find the conclusion. ठीक है, तो क्या होगा conclusion? Wait a second. ये तो क्या होगा conclusion यहाँ पे, let's see. So we must reduce the amount of money we spend on space exploration. Okay, we must reduce the amount of money spent on space exploration. Now this statement in itself should provide some reasoning to you. ठीक है, Hi Avinash, how are you? So ये जो statement है, ये आपको कोई ना कोई reasoning provide करेगा अपने आप को strong proof करने के लिए. Why? क्योंकि हमें जो अपना amount
ऑफ मनी है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कम कर देना चाहिए. So there should be a question popped up in your mind, why should we reduce the money for space exploration? So you need to find the answer. And जो हमारे premise होते हैं, this supports the conclusion, they gives us the reason. So if you see option number 2, right now the enemy is launching a massive military buildup. तो हमें अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों कम करना है? क्योंकि एनिमी अभी एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है. ऑल्सो वी नीड द एडिशनल मनी टू परचेज मिलिट्री इक्विपमेंट्स. ओके, सो अपने एनिमी की स्ट्रेंथ से सामना करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे. एंड अपना हमारा जो एनिमी है वो एक मैसिव बिल्डअप कर रहा है. सो वी हैव टू बी एट पार विद आवर एनिमी. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिड्यूस मनी on space exploration and we have to increase it in our defense expenditures. Okay, so now we get the supporting arguments for our conclusion. तो यहाँ conclusion क्या हो जाएगा? Conclusion यहाँ पे हो जाएगा, we must reduce the amount of money we spend on the space exploration. Okay, hi Avinash. So let me take your question. How to take subscription for Unacademy CLAT preparations? Okay, so Avinash, we were just discussing about the Unacademy CLAT batches. So before I give you how to take the subscription, let me explain कि Unacademy work कैसे करता है. मान लो आप enroll करते हो GK and Current Affairs batch के लिए, ठीक है, बट आप इसका मतलब ये नहीं है कि you are only enrolling for one batch. Actually, you are enrolling for whole Unacademy CLAT platform. ये जो CLAT का कैटेगरी है ना, आप इसके सारे पुराने बैचेस चेक कर सकते हो, सारे नए बैचेस चेक कर सकते हो. यू विल नॉट ओनली बी चेकिंग द 3 एजुकेटर्स क्लासेस, बट आप अपने मन से किसी भी एजुकेटर के क्लासेस भी चेक कर सकते हो. ठीक है, सो अब सब्सक्राइब कैसे करना है? इसके लिए यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वेब. ठीक है, आप एक वेब अनअकैडमी क्लैट के वेब पेज पर भी जा सकते हो और आप एक अपना जो ऐप है अनअकैडमी लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करोगे तो वहाँ सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा. यू कैन क्लिक ऑन दैट. जब क्लिक करोगे तो इसी तरह के 2 पेजेस आपके पास आ जाएंगे. यू कैन क्लिक, अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस का आपको जो अमाउंट है वो दिखाएगा. अगर आप आइकॉनिक पे क्लिक करोगे तो आपको आइकॉनिक अमाउंट दिखाएगा. ठीक है, वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू वांट टू टेक आप ले सकते हो. ठीक है, आफ्टर दैट आगे जाके जब आप नेक्स्ट करोगे तो वहां पे एंटर अमाउंट, एंटर मंथ्स करके आएगा. वहां पे यू कैन यूज द कोड. ठीक है, कोड प्लस अगर आप क्लासेस देखते हो तो कोड प्लस क्रेडिट्स आप इनपुट कर देना. क्रेडिट से एंड कोड से यू विल गेट द डिस्काउंट्स. ठीक है, यू कैन यूज द कोड कृति लाइव 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और क्रेडिट्स यूज करोगे तो यू विल गेट सम मोर डिस्काउंट. 6 मंथ्स के ऊपर EMI इज अवेलेबल. 6 मंथ्स एंड अबव के सब्सक्रिप्शंस पे EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, ऑल्दो बिलो 6 मंथ्स पे EMI ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. तो यू कैन पे फ्रॉम देयर. ठीक है, एंड यू कैन जॉइन एनी ऑफ द बैच यू वांट. For more details, Avinash, you can also connect with me anytime and you can ask your question here as well. ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकते हो. अगर समझ में आ गया हो तो do let me know. Okay. So everyone, we were discussing about the conclusion. I hope you understood this question. I did not give this question for you guys to solve, but ये जो next आपको एक पैसेज दिख रहा है ना, I want you guys to read it once and if possible, can you give me the conclusion in the comment section? Like just give me the first word and the last word. I'll understand कि इस लाइन में आपने conclusion कौन सा ढूंढा है. Okay, so I'll give you some time, read it out and just let me know what exactly according to you is the conclusion here. Hi Avinash. Avinash, so iconic. Wait, मैं आपको बताती हूँ. देखो, I'll show you actually. So plus में you will get your daily live classes. You will get all the live tests and the quizzes. अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो सब आपको प्लस पे मिलेगा. यानी जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं वो आइकॉनिक और प्लस के लिए सेम रहते हैं. जो टेस्ट होते हैं वो भी सेम रहते हैं. आपके एजुकेटर्स पर बैच विल बी सेम एज वेल. यू विल गेट दी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ऑल्सो. ठीक है, लेकिन अगर हम आइकॉनिक की बात करें तो आपको यहाँ पे 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप मिल जाता है. ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाता है और प्रायोरिटी इन क्लास भी मिल जाता है.
ठीक है। सो लाइव मेंटोरशिप का मीनिंग क्या है? लाइव मेंटोरशिप में टॉप 5 एनएलयूज से, ठीक है, वी हैव मेंटोर्स। वो मेंटोर्स आपको आपके डाउट्स के साथ हेल्प करते हैं, वो स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कस करते हैं, एंड एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव वो भी आपको आंसर करते हैं। सो यू विल गेट सम नंबर ऑफ सेशंस विद देम। पर अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट्स डिफरेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सेशंस। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो कुछ और सेशंस हैं, ठीक है। तो सब हर सेशन का नंबर अलग अलग है, जैसे इट कैन रेंज फ्रॉम 18 to 108 सेशंस पर योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड 360 सेशंस ऑल्सो। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाता है, एक मेंटोर जो आपको बताता है आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। वो आपके क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं, वो आपके डाउट्स भी बताते हैं। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ ज्वाइन कर लेते हो आप। आपको क्लास में भी प्रायोरिटी मिलती है, एज वेल एज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फिलहाल तो अनअकैडमी ने नोट्स रूल आउट नहीं किए थे, लेकिन बहुत जल्दी जो हमारे आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो नोट्स अभी फ्यूचर में आई थिंक बिफोर क्लैट 2022 वी विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स आल्सो। ऑल्दो फिलहाल मेंटोरशिप प्रोग्राम लाइव है, बहुत सारे बच्चे आइकॉनिक पर भी हैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नोट्स का प्रोविजन भी इट्स ऑन गोइंग, सो बहुत जल्दी आपको नोट्स का भी पता चल जाएगा। ओके, तो अविनाश, डिड यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस? Okay, everyone. So this was the question that we were solving. Okay, अब समझते हैं कि यहाँ पे conclusion क्या हो सकता है। Wine is made by crushing grapes and eventually, ठीक है, and eventually separating the juice from the grape skins. Okay. However, the separated juice contain impurities and many wineries do not filter the juice. यहाँ पे एक process दिया है, ठीक है। Wine कैसे बनती है? This is the process given. Wine is made by crushing grapes. Process का step number 1. ठीक है, eventually separate the juice from the grape skin. Process का step number 2. Then separated juice में impurities होते हैं and wineries उसे filter नहीं करते, ठीक है। Then we have wineries claim the unfiltered juice ultimately produces a more flavorful and intense wine, ठीक है। तो यहाँ से वाइनरी क्या बताती है कि जो अनफिल्टर्ड जूस होता है वो एक बेटर फ्लेवरफुल वाइन बनाता है। Since these winemakers are experts, we should trust their judgment and not shy away from unfiltered wine. Now, just forget your whole paragraph and just read it once. We should trust their judgment and should not shy away from unfiltered wine. Now, इस लास्ट सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए हमें ऊपर लिखे सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है। नाउ ये जो स्टेटमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स एक्चुअली प्रोवाइड अस द प्रेमिस, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे प्रेमिस है। प्रेमिस हमें हेल्प करता है अपना एक ओपिनियन बनाने में, और हमारा ओपिनियन क्या बना? वी शुड ट्रस्ट देयर जजमेंट एंड शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम द अनफिल्टर्ड वाइन। सो दिस बिकम्स अ कंक्लूजन। ये क्या बन गया? ये हमारा कंक्लूजन बन गया। नाउ गाइस, देयर आर आल्सो द कीवर्ड्स, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि होता है देयरफॉर, सो, हेंस एंड सम मोर, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स हमें इंडिकेट करते हैं कि इनके आगे, एंड थर्स, वन ऑफ द वर्ड इज थर्स, ठीक है। इस तरह के वर्ड, देयर आर फ्यू अदर वर्ड्स एज वेल, दीज इंडिकेट कि इन कीवर्ड्स के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा? वो हमारा कंक्लूजन ही होगा। So this is how you can identify the conclusion while in the passage or the paragraph. Okay, so this is a basic gist that I had to give you. Now, everyone, this is the question number 1 on the screen. Okay, just go through the question and do let me know the answer for the question above. Now in this question, you can read the question stem. ये जो आपको लिखा है, the statement above if true, best support which of the following assertions? Now this is the question step. Okay, अब passage क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं एक बार. So the United States, ठीक है, about $5,200 per person per year is spent on healthcare, while
In Britain, the amount is about the half. Okay, so US के मुकाबले में ब्रिटेन में half amount use होता है. Like, or we can say कि ब्रिटेन में हाफ अमाउंट यूज होता है हेल्थ केयर कॉस्ट पे, ये स्पेंड किया जा रहा है हेल्थ केयर कॉस्ट पे. इवन अ रीसेंट स्टडी इंडिकेटेड मिडिल एज व्हाइट अमेरिकन्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज देन मिडिल एज व्हाइट ब्रिटन्स. कंपैरिजन किसमें हुआ? कंपैरिजन हुआ मिडिल एज व्हाइट अमेरिकन्स, ठीक है, एंड मिडिल एज व्हाइट ब्रिटन्स का. ध्यान रखना, जब हमें कंपैरिजन ही मिडिल एज व्हाइट अमेरिकन एंड मिडिल एज व्हाइट ब्रिटन्स का किया गया है कंपैरिजन, तो हमें भी इसके बियॉन्ड नहीं जाना है. हमें ओवरऑल अमेरिकन एंड ओवरऑल ब्रिटन्स नहीं लेने होंगे, हमें स्पेसिफिकली ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना है, तभी हम राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे. Now it's written in the next line, even after eliminating from the study the lifestyle differences. यानी अगर आप लाइफस्टाइल डिफरेंसेस को भी हटा दो, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तब भी हमें पता चलता है कि अमेरिकन्स हैव पुअरर हेल्थ देन द ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स. नाउ you have to find the option that actually explains or concludes the given paragraph over here, because यहाँ पे हमें conclusion find करना था. So see, option number A देखो, healthcare spending, ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी रिड्यूस्ड बाय 50%. यहाँ लिखा है शुड बी रिड्यूस्ड, लेकिन पैसेज में तो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कम कर देना चाहिए. हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ढूंढना है, हमें कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, हमें बस इस पैराग्राफ को सपोर्ट करना है. एंड दिस ऑप्शन डज नॉट सपोर्ट द पैराग्राफ, thus this is not the answer. Next option is more expensive healthcare causes a high incidence of certain diseases. Okay, so we are again not discussing about the cost of healthcare. Yes, we are discussing about the amount spent by the person on healthcare in America and Britain. But overall cost, यहाँ पे जो बात हो रही है एक्सपेंसिव और चीप हेल्थ केयर की बात नहीं हो रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेंसिव हेल्थ केयर की वजह से सर्टेन डिसीजेस होते हैं. दिस वाज आल्सो नॉट डिस्कस्ड, हेंस दिस कैन नॉट बी द आंसर अगेन. Option number C here, the average healthcare spending of a middle-aged white Americans is probably less than the average healthcare spending of Americans in general. But we are comparing middle-aged white Americans to middle-aged white Britons. Then how can we compare middle-aged white Americans with other Americans? Okay, so that's why this option should not be the answer as well. So we are left with option number D, that says, actually option number E, something other than diet, exercise, smoking, drinking must account for the difference in the health of the two groups in the study. That means जो दो ग्रुप्स हैं जिन पर स्टडी किया गया था, कोई ना कोई और रीजन है जिस वजह से अमेरिकन की हेल्थ क्या है, पुअर है. Hence this is the correct answer. Also everyone, option number C जो है ना, ठीक है, this is also wrong. Why this is wrong? Because यहाँ लिखा है the money spent on healthcare in United States is not being used effectively. But again, how do we know the money is being used effectively or not? That's why this should not be the answer as well. So we are left with option number E and the correct answer. I hope you understood this question. If not, do ask it again. Then we have another question. The statement above, if true, provide the most support for which of the following conclusions? ठीक है, तो अभी हमें क्या ढूंढना है कि हमें यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, दैट मीन्स कौन सा कंक्लूजन है जो हमारे गिवन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है. ठीक है, सो गाइस रीड इट, ट्राई टू गिव मी द आंसर. Any answers?
Okay, so let's have a discussion about the question. Okay, so everyone, यहाँ पे albinism की बात हो रही है. So you would have seen कि albinism एक rare genetic condition होती है जहाँ पे production of melanin or pigmentation in the skin and hair so inhibits the production. Inhibit यानी कि production of melanin जहाँ पे रुक जाता है. So basically albinism is where एक skin जो है वो हमारा instead of having a color यहाँ पे जो skin है हमारी वो white हो जाती है. और ये व्हाइट स्किन क्यों होती है? ये अल्बाइनिज्म कैन बी देयर इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस, ये कहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. अल्बाइनिज्म इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन. ओके, यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन जो है वो रुक जाता है. इनहिबिट होना यानी प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन रुक जाता है एंड पिगमेंटेशन इन द स्किन एंड हेयर नहीं रहता. ठीक है, दैट मीन्स स्किन एंड हेयर टर्न्स व्हाइट. नाउ पीपल born with albinism are unusually susceptible to the sunburn, melanoma and the range of other health issues. Now because melanin production नहीं होता है इस वजह से sunburn काफी हो जाता है इन लोगों को. Then melanoma also. ठीक है, मेलानोमा एंड अदर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. नाउ एंड ये जनरली होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन. मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन, दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स आवर स्किन टर्न्स डार्कर. ठीक है, बिकॉज हम जब बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन. ओके, अब मेलानिन ही नहीं होगा बॉडी में तो हमें फ्रीक्वेंट सनबर्न हो सकते हैं. मेलानोमा दैट इज यू कैन से स्किन कैंसर ऑल्सो एंड अदर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द पैराग्राफ गिवन. Paragraph में there is the basic introduction of albinism, then the problem because of the inhibition of melanin. ठीक है, ये हो गया हमारा पैसेज. अब हमारा जो आंसर होना चाहिए ना वो भी इस पैसेज से ही रिलेटेड होना चाहिए, इस पैसेज के अराउंड ही होना चाहिए because we are finding the conclusion everybody. So let's eliminate the answer choices and let's find the correct answer. अब option number 1 देखो. People born with albinism develop other biological protections against melanoma and sun-related health issues. Just one question. Are we really discussing about the other biological protections from melanoma and sun-related health issues? No, we are not. Right? It's also not even mentioned in the paragraph. So, because we are finding the conclusion, this cannot be your answer. If we check this next option number 2, humans with high production of melanin can easily ignore health issues related to the exposure of sun. So certainly, guys, we are not talking about humans with high production of melanin. We are talking about the people who are dealing with the rare genetic condition called albinism. That's why this is not the answer. When a non-albino person gets sunburn, the amount of melanin produced by that person decreases. अब हम नॉन एल्बाइनो पर्सन की बात नहीं कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जब नॉन एल्बाइनो पर्सन को सनबर्न होता है तो मेलेनिन कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो इज इट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ? नो, इट्स नॉट. सो ये हमारा आंसर नहीं होगा. नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड समथिंग दैट सपोर्ट्स द गिवन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, जो एल्बाइनिज्म की बात करता है, प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखो. In humans, melanin plays a role in protecting the skin from developing sunburn and other sun-related ailment because inhibition of the production of melanin leads to sunburn, melanoma and other related health issues. यानी अगर melanin होता तो वो हमें sunburn से, melanoma से और other sun related problem से बचा सकता था. But because melanin है ही नहीं body में तो that's why pigmentation नहीं हो पाता जिस वजह से कि body को frequent sunburns या melanoma हो सकता है. Now this is the most related answer choice that actually supports the given conclusion. Hence that is your answer. So understood किस तरह से हमें conclusion. ध्यान रखना conclusion हमेशा हमारे पैसेज में से ही होगा. लैंग्वेज चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट को रीफ्रेज किया हो सकता है, बट द आंसर विल बी रिलेटेड फ्रॉम टू योर पैसेज. नाउ ऑप्शन नंबर ई है. It is not possible for a person born with albinism to adopt other artificial protective measures. Again, artificial protective measures की बात नहीं हो रही थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, so do let me know if you understood this question or not. Also everyone, आज का जो फाइनल सेशन है वो हम यहीं तक का रखेंगे. No, I know we have covered very less number of questions today, but don't worry, जो हमारा upcoming week है वहाँ पे मेरी क्लास होती है 1 PM पे. So guys, from next Monday to Wednesday, because I know CLAT is just around the corner and it's very important that we start studying properly. ठीक है, good afternoon King, how are you? ठीक है, तो Monday to Friday
हमारे क्लासेस होंगे यूट्यूब पे। सैटरडे को और संडे को हमारे मैराथन सेशंस। नाउ ऑन मंडे टू फ्राइडे एवरीबॉडी हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ रिवाइज करेंगे। टॉपिक्स रहेगा हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। ठीक है, आप मेरे स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं क्रिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कवर करवाती हूँ। Today also you can join me at 5:30 p.m. जहाँ पे I'm going to teach assumptions and we are going to solve assumption based questions. Okay, so 5:30 p.m. everyone. Today on Unacademy special class है, open for everyone. ठीक है, this is a special class. ठीक है, special classes are open for everyone. Anybody can join these sessions. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मेन आइडिया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि मेन आइडिया किसी भी क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। Okay, so that's all for today, everyone. Thank you so much for being in the class and do hit the like button अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा।